Very good afternoon to respected sir and all my dear friends present over here. I, Simran Samantri, welcome you all on behalf of Dia Delhi. As we all are today to extend our heartfelt regards to the epitome of excellence for science and technology, Mr. Neeraj Nachiketa, sir. It's an honor to introduce him in front of all. A journey that began in the heart of Devgar, Jharkhand. His path has been paved with struggle, yet his unwavering perseverance and indomitable spirit have illuminated the way for all of us. He not only holds a membership in the prestigious Bar Council of India, but also served as a practicing advocate in the intellectual property rights at Supreme Court of India and the Delhi High Court. Sir's journey is rooted in a diverse range of experiences, a trained biotechnologist and also an alumni of many reputed institutions like IIT Bombay, University of Mumbai and National Law School of India University in Bangalore. Sir's excellence led him to complete the certificate course in IPR from the United Nations World Intellectual Property Organization, Geneva. He holds an LLM degree in environmental law, energy, and climate change. Sir has a long association with students and competitive exams aspirants all over the country in various orientation programs conducted in the universities, colleges, and institutions. His influence extends to well-known institutions such as Vajiram and Ravi, Vision IS, Byju's, and many more, making him a cherished flying faculty figure. And this flying faculty has traversed the length and breadth of our country from Bangalore to Tiruvananthapuram and from Kolkata to Coimbatore. Sir is guiding civil servants aspirants for more than 10 years. His commitment to education is further evident in his literary works, including books such as General Science and Technology and Science and Technology from Inception to Advancement. Last but not the least, thank you, sir, for being a part of our journey. Now, I would like to request Neeraj, sir, to proceed with the session. Thank you. I was not feeling very comfortable when she was putting all appreciation. So first of all, thanking her. She has done a lot of research and found out many things about me. But the fact is that, which I always say that introduction is not a very important thing. Your job, your duty is the most important thing, right? तो इंसान को उसके काम के लिए पहचान मिलती है ना. उसने क्या डिग्री लिया है, कहाँ क्या किया, वो बहुत मैटर नहीं करता है. That I always believe. And whenever I start any class, I never go for any introduction. First time in Sambhavam IAS, this type of procedure is there, where a person reads about the faculty. But I believe that that one thing is that the work, the content, that has to be there. But thank you for giving me all those appreciation there. So that's for that I am very humbly thank Simran and Sambhavam IAS and all of you who have come for offline class. As I told that I will be coming to the offline class. So actually on 14th I am flying to Trivandrum. I have got classes there. So what we have decided is that I will be continuously be on the online mode so that you are able to get the content there. And I have already covered space and astronomy topic. So far we have covered space and astronomy. Now I'll continue further from there. है ना, हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, जो भी चीज़ों को बताया. And yesterday I think in the morning I sent the document also there. I was using the iPad, है ना. iPad में मैं लिख के होटल के रूम से पढ़ा रहा था. तो यही टाइम था, 2 बजे का टाइम था, 2 o'clock. So I was in Jaipur that time. Last night I came back. So I had already given you all the handwritten notes also there. तो उसको follow करना है. And I've been always saying that the exam has become very dynamic, right? And I've been telling you right from beginning. Whenever I am taking any class in any institute, I generally give that the idea there. ठीक है. क्या होता है जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे बहुत सारी पाबंदियां होती है. ठीक है. वो जनरली क्या करते हैं, यहाँ जितने कॉर्पोरेट स्टाइल के इंस्टीट्यूट है वो बोलते हैं कि यही बताओ वो नहीं बताओ, यही पढ़ाओ वो नहीं पढ़ाओ. ठीक है. लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि ये जो भीड़ आप जो देख रहे हो, लाखों रुपया दे के वहीं जुड़ते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं और अंत में क्या होता है, उनका रिजल्ट 0 हो जाता है. लेकिन यहाँ पे मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, यहाँ मैं खुलकर बोल सकता हूँ. ठीक है. क्योंकि आई नो कि रियलिटी क्या है. इसीलिए क्या है कि मैं अभी तक जितने भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, जहाँ मुझे सही नहीं लगता है मैं खुद टाटा बाय बाय कर देता हूँ. उनके पास पढ़ाने के लिए 10 टीचर के लाइन लग जाते हैं. बट वही है कि द फैक्ट इज दैट
कि आई ऑलवेज बिलीव कि स्टूडेंट शुड नॉट बी चीटेड, उनको सही रास्ता मिलना चाहिए. दैट इज व्हाट आई हैव बीन ऑलवेज देयर. इससे मुझे अच्छा लगता है कि मैं कई जगह जाके पढ़ाऊं rather देन एक जगह बैठ के क्लासेस ले रहे हैं. ठीक है, तो वो अंतर है. दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट what is right now going in the market, they are not going the right direction, and this will be again be evidence on 26th May prelims exam. You will see the question, how questions have come this year exam. जो ये भटकाव में है, जो ये भीड़ में है, इसमें से 99% लोग फेल होंगे. द फैक्ट इज देयर. मैंने बताया भी क्लास में कि रीडिंग रूम में जो मटेरियल आजकल फ्लोट हो रहा है, फोटोकॉपी दुकान से लेके पढ़ रहे हैं, ज्यादा चीज कर नहीं रहे हैं. यूपीएससी इज वे बियॉन्ड दैट. यूपीएससी इज मच अहेड ऑफ ऑल दिस. सो मेरा यही कहना है कि व्हेन यू आर इन संभवम आईएएस, द राइट पाथ, and I believe the right path is following the newspaper in a regular way. If you follow daily current affairs, read newspaper, and get through the topic based on the syllabus, then you are on the right track. If UPSC asks question from any dimension, you are able to solve the question. है ना, आप वहाँ सॉल्व कर सकते हो. तो वो चीज़ है. तो हम लोग इंटरेक्ट भी करेंगे. I'll have a half an hour interaction with all of you. So although we were late for the class, so what I'll do here, defense technology, like space technology, I have already covered, and I've given you the idea there. I've told last class, I know Indian Neutrino Particle Observatory. Then I've discussed about Dark Sky Reserve, India's first dark sky reserve, that is a Henley in Ladakh. You have seen the video also there. I have played the clip of the video from the Leh Ladakh, Changthang. There's a plateau region, and there we have a dark sky reserve. It has a lot of dimension. One is the astronomy. Second is in terms of environment protection. Third is about the tourism, right? People can go and visit there. They can explore the night sky. They can see the galaxies, stars, planets. There's another way that particular dark sky reserve has a relevance. Then I've also discussed TMT, 30-meter telescope, Hawaii Island. All these are the topics which are gray areas. ठीक है, चंद्रयान 3 पे क्वेश्चन आ गया. जो क्वेश्चन पूछना था वो हो चुका है. अब आपको ऐसे एरिया में जाना है जहां क्वेश्चन नहीं आया हुआ है. जैसे आदित्य L1, there you can get the question, right? UPSC has not asked the question. निसार मैंने बताया, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, वहां क्वेश्चन आ सकता है. You have to go to gray areas, right, where questions can be asked in the exam. Now, defense technology, if you look at, I'll just bring one very important dimension in that. In defense technology, just keep in mind, questions are not regular. But in between, UPSC asks question. Last year, there was a question about ballistic missile and cruise missile. Direct question was asked. Okay? Ballistic missile and cruise missile, these are two type of classification of missiles. And we have Agni missile. Agni is a ballistic missile, surface-to-surface missile, whereas we have a BrahMos, India-Russia joint cooperation. We have BrahMos cruise missile, supersonic, and now we are making hypersonic. So that part UPSC asked last year prelims exam. और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है. अब बैलिस्टिक और क्रूज पूछ लिया गया ऑलरेडी. यूपीएससी आज क्वेश्चन लास्ट ईयर, यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू रिपीट इट. सिंपल सी बात है. हो सकता है इस बार एग्जाम में डिफेंस का क्वेश्चन रहे भी नहीं. इट वोंट आस्क एनी डिफेंस क्वेश्चन. क्योंकि भाई बिकॉज यूपीएससी हैज टू मेंटेन द ट्रेंड. लेकिन अभी क्या हो रहा है, जितने करंट पर मटेरियल है पूरी महाभारत बता दे रही है, पूरा मिसाइल, पूरा A to Z. जो आ चुका है वो आ चुका है, वो दोबारा नहीं आएगा. और यूपीएससी इज वेरी स्मार्ट. यूपीएससी की नजर बहुत तेज है वहां पर, राइट. तो अभी क्या हो रहा है, इसलिए होता है जितने करंट अफेयर्स मटेरियल पढ़ते हो वो क्या करते हैं, पिछले साल जो पूछा है उन्हीं पे सारा कंटेंट दिया जाएगा, कुछ नया नहीं है. सो दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. यू हैव टू बी प्रिकॉशियस. नाउ यू विल फाइंड ऑल दिस मटेरियल्स. दे विल गिव यू एवरीथिंग अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, types of missiles and everything there. And then definitely UPSC will not ask. If UPSC has to ask question from defense technology, it will go to some new areas, gray areas, like naval defense from Navy, submarines. That question could be asked. Radar system, sonar system, then fighter jet. Those questions can be asked. So missile padna hai. I mean to say you have to know missiles, but at the same time you have to be prepared. Those areas of defense technology where it is in the news, and I've been telling what last 5 years, not last 1 year. है ना, ज्यादातर आप लोग एक साल, और यहाँ जितने लोग टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि एक साल का करंट अफेयर पढ़ लो. अब यूपीएससी एक साल में नहीं, पीछे भी जा रहा है.
इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है करंट अफेयर इज ऑलवेज एवरग्रीन. व्हेन यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स इट ऑलवेज पे यू बैक. जो चीज आपने 3 साल पहले पढ़ा होगा और उस दिन एग्जाम में आ गया, यू आर द विनर, क्योंकि आपको पता है आप सॉल्व कर लोगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ जितने लोग इस साल नहीं दे रहे, जो लोग 2025 में 2025 2026 का टारगेट है, करंट अफेयर्स करते जाना. करंट अफेयर्स छोड़ना नहीं है. करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट एक बात और मैं क्या कहता हूँ, आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि केवल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है. फर्स्ट यू हैव टू कमांड बेसिक्स, right? First, you should have good command over syllabus, then current affairs, next dimension current affairs, then government programs. That approach you have to build, and I'm very sure you all are doing that. Every teacher who teach here would have told you about this approach कि syllabus को पढ़ना है और syllabus को फिर current से link करना है. ठीक है ना? तो that approach you have to build. तो हम लोग डिफेंस पे पढ़ेंगे. तो मैं ऐसा करता हूँ, डिफेंस का जो टॉपिक है, if we take here this topic, what I, so first we need to know DRDO. Spelling mistake is there. DRDO, Defense Research Development Organization. Let me do one thing here. I will get back to the, I think this is a PPT they have given. PPT is there. I want to go back to the writing part. Okay, I got it. No, I got the point here. Okay. See, very first thing is all right. The very first thing is the DRDO. When it comes to DRDO, Defense Research Development Organization, this is a scientific organization which work in the field of defense technology development. And the DRDO started its beginning. It was established in 1958. After independence, when the government realized that we have to be dependent on developing cutting edge weapons, right? हमें ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है जो हमारे देश के सुरक्षा में, it can support our national security, it can support our army, air force, navy. With that objective, with that vision, right, the central government established DRDO. So if you take 1958 and we are right now 2024, it has already traveled or already gone for more than 60 years of development. कमी है, आज हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी में कमी है. इंडिया अभी भी बायर है. वी स्टिल बायर ऑफ वेपन्स. वी बाय फ्रॉम फ्रांस, वी बाय फ्रॉम यूएस, रशिया, Israel. Israel is another strategic partner of India. But the fact is that all this kind of development, that is what, but we have to again depends on the self reliance or indigenization. And we have to be dependent on that. So DRDO started journey way back in 1958. And if you look at the areas of work, first is the missile technology. और आप सबको पता है कि इंडिया आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में है ना टॉप 5 कंट्रीज में आता है. एंड इज ओनली बिकॉज ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम व्हाट इज कॉल्ड IGMP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, started in 1983. There's a very, very important central government program there, DRDO program 1983. है ना, वर्ष 1983 में DRDO के द्वारा जो है ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी. एंड यू ऑल नो दैट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, डॉक्टर कलाम की अगुवाई में ये कार्यक्रम का शुरुआत किया गया. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, he was given that in charge to develop this one. And we developed 5 types of missiles. You are aware of that. Which are those missiles? India was successful. कौन कौन से मिसाइल है जो इंडिया ने सक्सेसफुली डेवलप किया? अग्नि, पृथ्वी, गुड, आकाश, नाग एंड त्रिशूल, है ना. दिस आर 5 आर देयर. ये जब भी हम लोग कभी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए. फिर उसको क्या करना है, एक बार समझने के बाद करंट एस्पेक्ट, करंट में क्या क्या है. तो विल गेट टू द करंट एस्पेक्ट. बट यू नो दैट व्हेन यू रीड बुक्स, है ना, इसमें कई लोग होंगे कहीं और भी कोचिंग करके आए होंगे. देयर आल्सो द टीचर, साइंस से टीचर टीच अबाउट दिस प्रोग्राम, IGMP program, integrated guide. So 1983 we went for a very important missile, Prithvi. What is Prithvi? Surface to surface short range missile. क्या होता है शॉर्ट रेंज मिसाइल? जिसका रेंज 300 किलोमीटर्स, है ना, उसके आसपास या उससे कम होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता है. व्हाट इज रेंज? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस ट्रैवल हॉरिजॉन्टल, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेंज. एंड व्हाट वर्ड आई हैव यूज्ड? सरफेस टू सरफेस. दैट मींस वी कैन फायर फ्रॉम land surface, at the same time water surface, like navy,
and it can go to a target which is on the land or water surface. That's the missile. But what is the problem here? Range is very small. यहाँ पे जो पृथ्वी का है, पृथ्वी का जो अगर हम बात करें, है ना, I'll come back to this. Just मैं I have a very limited space, तो अब नीचे मैं लिख देता हूँ. If you take a पृथ्वी मिसाइल, तो फर्स्ट व्हाट आर द की वर्ड्स, हमेशा याद रखना है आपको, की वर्ड पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या क्या मेन चीजें पता होना चाहिए. पृथ्वी क्या है? एक तो ये बैलिस्टिक है, जो बैलिस्टिक मिसाइल. नाउ व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल? जो पाथ जो होता है, द पाथ ऑफ द मिसाइल इज दिस वन. इसको सब ऑर्बिटल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सब ऑर्बिटल. और पैराबोलिका है, द प्रोजेक्टाइल, जस्ट लाइक अ प्रोजेक्टाइल. हियर द फ्लाइट पाथ दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है. एंड सो व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड और द वाटर सरफेस, इट इनिशियली गोज टू द अपर एटमॉस्फेयर, है ना, पहले वो अपर एटमॉस्फेयर जाता है, एंड देन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, पुल ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, इट रिटर्न बैक, वो वापस आता है ना. तो दैट इज व्हाट द बैलिस्टिक मिसाइल पाथ इज ऑल अबाउट. तो पृथ्वी के साथ क्या है? ये जो रेंज है, दिस रेंज, दैट इज अ शॉर्ट रेंज. नाउ हियर व्हेन डीआरडीओ डेवलप्ड दिस मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, so it went to develop 3 types of the missiles. I'll give you latest development also. We developed Prithvi 1, that time 150 kilometers, that was the range. Then Prithvi 2, we went to develop 250 kilometers range, and then Prithvi 3rd, that is a 350 kilometers range. है ना. आज ये प्रोग्राम क्या है? पुराना हो चुका है ना. 1983 में उस टाइम जब हमने डेवलप किया था, तो वी हैव डेवलप दैट टाइम. लेकिन अभी क्या होता है, आपको यू ऑल नो, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होता है, एंड यू नो समटाइम टेक्नोलॉजी बिकम ऑब्सोलीट. द टेक्नोलॉजी व्हाट वी वर यूजिंग 20 years बैक, नाउ दे आर नो मोर, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल, उस समय क्या हुआ करता था? टेलीप्रिंटर, फैक्स मशीन, आज नहीं है. टेलीप्रिंटर स्टिल देयर, बट नाउ यू नो द न्यू टेक्नोलॉजी हैज कम अप, द लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो सेम वे द मिसाइल विच वर डेवलप्ड देयर, it was given to army, right? But what has happened? Now we are in 21st century. A lot of advancement has happened. तो अभी हमने ये पृथ्वी का जो है, इसको हम धीरे धीरे फेज आउट कर रहे हैं. अभी रिसेंटली 2 ऐसे मिसाइल बनाए गए. एक है प्रहार, है ना, वो और एडवांस है. पृथ्वी क्या है? पृथ्वी 1 एक ही डायरेक्शन है, मतलब एक बार फायर किया, टारगेट इज डिटरमाइंड, वो टारगेट पे जाके गिरेगा. हम अलग अलग डायरेक्शन नहीं कर सकते. अब क्या किया जा रहा है? ओमनी डायरेक्शनल, ऑल वेदर, whether it's rainy season, summer, winter, all type of terrain. What is terrain? Means landscape, whether it's a coastal area or maybe a forest area, maybe a mountainous, we can use that. But still you have to know. Why you have to know? As a background, okay, what was the earlier development there, right? So earlier development, that is where this missiles were developed. Now इसमें एक चीज याद रखना है कि जब ऐसे मिसाइल को डेवलप करते हैं, मिसाइल क्या होता है? लाइक अ रॉकेट, इट नीड प्रोपल्सन सिस्टम, प्रोपेल, है ना. पहले क्या होता है? मिसाइल व्हेन इज प्रोपेल्ड जस्ट लाइक अ रॉकेट, इट गोज अप, ठीक है. देन व्हाट हैपेंस? इट डजंट रिक्वायर प्रोपल्सन. एक बार वो ऊंचाई पहुंच गया, तो अगर इसका प्रोपल्सन काम नहीं भी करेगा, इंजन, अर्थ की ग्रेविटी, इट विल कम बैक, है ना, इट रिटर्न्स बैक. दिस व्हाट हैपेंस. तो यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्यूल, कि व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पीएसएलवी, जीएसएलवी, सॉलिड फ्यूल, है ना, लिक्विड फ्यूल, क्रायोजेनिक, ऐसा बात है. तो यहां पर जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी में इट यूजेस लिक्विड प्रोपेल्ड. मोस्ट ऑफ आवर मिसाइल्स आर सॉलिड बेस्ड. जैसे अग्नि है, आई विल बी कमिंग टू अग्नि. अग्नि इज अ सॉलिड फ्यूल, बट हियर लिक्विड वाज यूज्ड. Chemical liquids are there, just like petrol, diesel, kerosene, what we burn, and that generate the thrust. यहाँ भी thrust चाहिए, क्योंकि लाइक रॉकेट ये आसमान में जाता है और फिर वापस लौटता है. तो वहां पर ये चीज है, तो इसको लिक्विड फ्यूल बेस्ड बनाया गया था. तो यहाँ पे क्या जानना है? एक तो बैलिस्टिक है, दूसरा क्या है? शॉर्ट रेंज है, तीसरा क्या है? सरफेस टू सरफेस. दैट पार्ट इज देयर. कीवर्ड्स, गेट टू नो दोस फैक्ट्स. डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑल अबाउट फैक्ट्स, आपको याद रखना होता है. देन अगेन आई सेड लिक्विड प्रोपेलेंट, लिक्विड फ्यूल इज यूज्ड, ठीक है. एक और इस पे जो ध्यान रखना है वो ये चीज है, पृथ्वी सेकंड, है ना, का एक नेवल वर्जन डेवलप किया गया, धनुष. मिसाइल कॉल्ड धनुष. तो लेट मी राइट हियर,
You can also write here Dhanush. See, whenever you come across the word Dhanush missile, अभी रिसेंटली इट वाज इन द न्यूज, कई चीजें ना पास्ट के भी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट होते हैं, तो वहां नई चीजें आती हैं. तो धनुष मिसाइल इज अ नेवल वर्जन, नेवल वर्जन ऑफ पृथ्वी 2 मिसाइल. एंड यू नो द रेंज 250 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर रेंज. इसको नेवी में कहाँ यूज करते हैं? हमारे नेवी में डिस्ट्रॉयर्स होते हैं. वी हैव अ बिग फ्लीट शिप्स, वॉरशिप्स, जिसको युद्ध में, लड़ाई में, है ना, जंग में यूज होता है. कि जब हमें कभी भी मोबिलाइज करना होगा एंड वी आर थ्रेटेंड एट द सी लेवल, सो आवर डिस्ट्रॉयर्स कैन गो देयर एंड दे आर इक्विप्ड विद मिसाइल्स. उनके पास मिसाइल्स होते हैं, केवल बैलिस्टिक नहीं, क्रूज भी होता है, ब्रह्मोस वगैरह जो है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल वहां पर आता है. तो वहां पर धनुष दिया गया. धनुष आपको पता है संस्कृत नेम बो, है ना. धनुष मतलब बो, इसमें बैलिस्टिक पाथ इज देयर, दैट्स गिवन देयर. और अभी मैंने क्या बताया, अब इसको धीरे धीरे जो पृथ्वी मिसाइल है, इसे धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है. जैसे पृथ्वी 1 डीकमीशन, कई बार क्या करते हैं, डीकमीशन. अब इसके जगह पे हमने प्रहार को डेवलप किया है. प्रहार इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट. प्रहार मिसाइल हैज this replaced, you can write the replaced पृथ्वी 1 मिसाइल. वो टाइम के साथ जब डेवलपमेंट होता है, देन वी टेक द इनिशिएटिव्स. जब डीआरडीओ के द्वारा ये प्रहार बन गया, अब क्या स्पेशल है प्रहार के बारे में, जैसे मैंने बताया ऑल डायरेक्शंस, ऑल वेदर. सो लेट मी राइट हियर. सो प्रहार यू कैन राइट देयर. लेट्स से if any question comes in the exam about the Prahar missile, this Prahar I have given, so I'll write in the next page there. So Prahar missile, if you look at this missile, then I'll take your doubt also there. So Prahar, and what I'll do, whatever I'm teaching today will continue with our classes also there, so that all areas, particularly all of you going to appear prelims exam, so I'm targeting the prelims exam कि कहाँ क्वेश्चन आ सकते है ना. कम से मतलब मान के चलो कि 15 क्वेश्चन अगर आता है, 12 से 15 क्वेश्चन, तो आपका एडवांटेज हो कि आप मैक्सिमम कर पाओ. ठीक, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे क्या करे, यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम, यही है ना. तो फिर ये सारा मेहनत तो बेकार हो जाएगा अगर प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होगा तो हमारा वो टारगेट है. ठीक है, मेंस का चीज हम लोग बाद में करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. डीआरडीओ का कैसा क्या हुआ, विल सी दैट. इसरो, डीआरडीओ, अभी मैं टॉपिक इसलिए अब कर रहा हूँ. तो ये क्या है, प्रहार क्या है, इसको बोलते पहला बोलते हैं ओमनी डायरेक्शन. ओमनी डायरेक्शन जो होता है, ठीक है, all weather, we can use this in all weather conditions, whatever conditions are there, all weather conditions. And then again all terrain, TERRAINS, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, हमारे आर्मी के पास ये बहुत महत्वपूर्ण हथियार है कि हम कहीं भी किसी भी दशा में हो फायर कर सकते हैं. अब रेंज की बात यहाँ पर जो है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है, ये भी रेंज यहाँ पर कम है, 150 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर तक का हम इसमें यूज कर सकते हैं, बट कम है. मतलब कई बार लड़ाई में जब युद्ध होता है, जंग होता है, तो हमें और लंबे रेंज का देखना होता है. बट यस, लेट्स से बैटलफील्ड, ड्यूरिंग द बैटलफील्ड 150 किलोमीटर वी कैन मैनेज इट. और अब हमारा पता है ये दो, है ना, मित्र राष्ट्र है जिसके साथ हमारी बहुत अच्छी मित्रता होती है. एक है पाकिस्तान और दूसरा है चीन, चाइना. ठीक है, पाकिस्तान को तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई डर नहीं है. प्रॉब्लम है चाइना के साथ. ठीक है, एंड यू नो चाइना सपोर्ट पाकिस्तान, राइट. तो इंडिया इज वेरी कॉन्फिडेंट कि नो, इफ देयर इज एनी वॉर विद पाकिस्तान विल हैंडल इट. क्यों? क्योंकि हमारा इतिहास है, 3 बार तो हम जीत चुके हैं. ठीक है, 3 बार तो हमने जीता है. प्रॉब्लम कहाँ आता है? चाइना फैक्ट. एंड बिलीव मी, चाइना इज मच एडवांस इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी. वी लुक एट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, हम कितना भी कर लें, ड्रैगन को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है. यू नो ड्रैगन, यू अंडरस्टैंड दैट, कि वहां जो है. और आज ये बात हमें मानना होगा. ठीक है, दिस फैक्ट वी हैव टू एक्सेप्ट कि वी आर नॉट इन अ पोजीशन ऑफ वॉर विद चाइना. वॉट एवर चाइना डज, वॉट एवर मीडिया क्राई और हो हल्ला जितना भी मीडिया में हो, आज हम चाइना को नहीं कर सकते. अगर आज वॉर हो तो अगेन 1962 रिपीट हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड दैट, जब हम लोग चाइना से हार गए थे. चाइना इज स्टिल वेरी एडवांस इन द मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑल्सो, right, space technology also. We are having, you know, competition.
अब एक साथ ये भी कह सकते हो, ये भी एक तरह कोल्ड वॉर है, राइट? कोल्ड वॉर, जैसे यूएस एंड रशिया इज लाइक a cold war in this South Asia, right? India being a big country, and then China is another big country area wise if you look at geographical territory. So we are into having cold war, although we are not fighting each other on sometime, we have Galwan Valley, Doklam issues, those are things there, but still under control. We have not gone into war like situation, but that is thing there. So that's what we need to always upgrade our system, right? We have to always upgrade our system. That's why Prithvi, which was developed long way back, we have gone into Prahar. Prahar has become a very word. Now I'm coming to current affairs. Pralay. What is the new missile now? Pralay. So now a new development has been there. Pralay missile. So you can write here Pralay missile. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है कि once you are reading about anything, let's say अभी मैंने क्या अप्रोच दिया कि first I started IGMP. I took one missile. Which missile? Prithvi. Then I connected with Navy, Dhanush. Then I've gone to upgradation. What upgradation? Prahar and Pralay. Pralay is now making headlines. और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, गूगल, इंटरनेट, है ना? यही मैं अभी 5 दिन ऑनलाइन भी बता रहा था आपको कि यू शुड मतलब डेवलप दिस हैबिट. कुछ भी पढ़ रहे, न्यूज़पेपर, बुक, जिज्ञासा. व्हाट इज जिज्ञासा? इंक्विजिटिवनेस. क्या है प्रलय? ठीक है, एक है कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल, एक है बियॉन्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट मटेरियल. तो कहां पर आ सकता है? डीआरडीओ का. तो प्रलय जो है, प्रलय इज सेम एज प्रहार, बट द रेंज इज हायर देन प्रहार. नाउ वी आर एक्सटेंडिंग टू 300 kilometers. And you know which is 300 kilometer range? 350 kilometer. Prithvi third there. That's where the प्रलय is there. नाम भी बहुत खतरनाक है, प्रलय, राइट? बोलते हैं जब प्रलय आएगा सब कुछ बर्बाद, ए टू जेड सब कुछ खत्म, राइट? तो ऐसा मिसाइल कि एक बार मारा खत्म सारा कुछ. ये चीज वहां प्रलय का वहां होता है. तो डीआरडीओ इज वेरी फैसिनेटेड विद संस्कृत वर्ड्स, है ना? वो जितना भी नाम है, अग्नि, पृथ्वी, जैसे त्रिशूल, जितने सब, नाग. अभी हम नाग भी पढ़ेंगे. नाग तो और एक इंटरेस्टिंग मिसाइल है, इंडिया का एक बहुत पावरफुल मिसाइल है नाग जो है. नाउ लेट सी हियर इफ द ब्राउजर इज वर्किंग. लेट मी सी अगर है कि नहीं. जस्ट वंस. आई थिंक इट विल नॉट बी वर्किंग. इज वर्किंग. गुड, वेरी गुड. गूगल हैज टू बी देयर. गूगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गूगल को अपने साथ, जब तक आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हो तब तक आपके साथ गूगल होना चाहिए, ठीक है? हाँ, एग्जाम में तो गूगल नहीं काम करेगा, ठीक है, उस समय तो काम नहीं करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए. देखो नाम दिया ना, एपोकैलिप्स. एपोकैलिप्स, दैट्स द नेम ऑफ इंग्लिश वर्ड इज देयर. प्रलय मिसाइल. नाउ सी हियर दिस वन, स्टे साइंड आउट. लुक एट हियर. व्हाट इज प्रलय मिसाइल? 350. फैक्ट्स. फैक्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन आ जाए, इफ यूपीएससी गिव दैट फैक्ट, यू आर द वन. और ये बहुत सिंपल है. व्हाट सिंपल है? पृथ्वी 1 150 किलोमीटर, Prithvi 2 250 kilometer, Prithvi 3 350 kilometers. Then what we did, we developed Prahar, replaced what? Prithvi 1 150 kilometer. Next, what upgradation? Pralay, we have gone to 350. So matlab, it is what is Pralay? Is an upgradation of Prahar. We are upgrading the Prahar missile. तब हमें पृथ्वी 1 का डेवलपमेंट हुआ था, अब हमें पृथ्वी 1 की जरूरत नहीं है. अब हमें क्या चाहिए? प्रलय चाहिए. This is what has been there, right? And you can see, you know the place, कलाम आइलैंड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, व्हीलर आइलैंड, बालासोर, है ना, उड़ीसा, राइट? उड़ीसा में ना चांदीपुरम सी बोलते हैं. व्हीलर आइलैंड का चांदीपुरम सी, दैट्स द नेम ऑफ द प्लेस इन उड़ीसा वेयर वी हैव एन आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल कॉल्ड व्हीलर आइलैंड, बट नाउ इट इज रिनेम्ड एज कलाम आइलैंड, डॉक्टर कलाम के नाम पर. आईटीआर बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज. हमारे जो भी मिसाइल्स हैं वही हम फायर करते हैं. और एक बार पता है यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, क्या आया था? बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि कौन सा ऐसा जगह है इंडिया में जो समुद्र जो है 3 से 5 किलोमीटर पीछे चला जाता है. सी गोज रिसीड्स 3 to 5 kilometer back. We have places in India, in east coast also and west coast also. West coast में द्वारका है, गुजरात साइड में, and in east coast बालासोर. They just replace. So that becomes ideal time for doing testing. Imagine 3 kilometers. 3 kilometers मतलब, from here to metro station, how many kilometers will be there? मेट्रो. सिमरन कितना दूर होगा मेट्रो? यहाँ से मेट्रो होगा, पैदल जाना है 500 मीटर होगा, ज्यादा नहीं है. 3 किलोमीटर आप समझो. 3 किलोमीटर मतलब है झंडे वालान, झंडे वालान मंदिर,
है ना, जय माता दी, वहां तक पहुंच जाओगे आप। हनुमान जी जो है ना, वहां तक पहुंच जाएंगे आप। सोचो आप, दैट इज अ वेरी यूनिक थिंग ऑफ अवर ज्योग्राफी, द सी गोज बैक, देन लैंड विल बी एक्सपोज्ड, राइट, एंड दैट टाइम वी कैन कंडक्ट एनी टेस्ट। तो बालासोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहां प्रलय को किया गया, तो सारे मिसाइल होते हैं, जो भी है सारे यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये चीज क्या है, ये न्यूज में आया, और यहाँ पर है ना, मैंने बोला ना कि हमें चाइना से तैयार रहना है। LAC is with China. That's given here. LOC is also there, but LAC is most important one. And now you see current affairs. It's November 2023. तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप पढ़ो करंट अफेयर मटेरियल, लेकिन वो ये भी देखो कि ये सब कवर हुआ है कि नहीं हुआ है ना। 8 November 2023, it was in the news just few months back, है ना। अब क्या पता यूपीएससी के दिमाग में क्या चल रहा है, nobody can predict ना। आपका होमवर्क होना चाहिए, ठीक है, आ गया मिसाइल पे, आई एम द वन टू सॉल्व, ठीक है, आई नीड टू गेट द आंसर देयर। ये, हाँ, इसमें सॉलिड फ्यूल है, अनदर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई वाज अबाउट टू कम टू दैट। पृथ्वी वन वी स्टार्टेड, बट हियर रिमेंबर दैट 99% आवर मिसाइल्स आर सॉलिड फ्यूल। ऐसा क्यों है, क्यों सॉलिड फ्यूल करते हैं, लिक्विड क्यों नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है, इसका भी कॉन्सेप्ट है। वाई वी प्रेफर सॉलिड फ्यूल, वाई वी प्रेफर सॉलिड फ्यूल, वाई नॉट लिक्विड फ्यूल देयर, व्हाट कुड बी रीजन, क्यों हम सॉलिड फ्यूल पे क्यों ज्यादा भरोसा करते हैं, हाँ? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो थोड़ा वेट जो होता है, इट गिव्स स्टेबिलिटी, because if you have a liquid is a lightweight, liquid thing is lightweight, and what the missile has to maintain, missile has to maintain trajectory, path, ठीक है। Another thing is that in that see, liquid burns very fast. If you imagine, if you burn a kerosene, it will burn very fast. Solid burns slowly, so it can remain giving propulsion for long time duration, duration, it can go for long time burning, long time the thrust can be provided. That's what we prepare. And second is that we have to make it stable on the ground. We have a launch system, launching vehicle we have. Either it may be a truck mounted, generally mounted on a truck. Some system is there which we have to carry from one place to another in battlefield. जब लड़ाई होती है ना, तो हमें मूव करना होता है, मोबिलिटी क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब आप फायर करते हैं तो एनिमी नो योर लोकेशन, कि द फायर इज देयर एंड नाउ दे विल डू काउंटर फायर, तो यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम देयर, आपको वहां से हटना होता है। और वहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्विक, वेरी क्विक डिप्लॉयमेंट। तो वहां अगर मान लो कि मिसाइल हमें यूज करना है, तो वी नीड टू हैव सच काइंड ऑफ कैरियर विच कैन टेक इट वेरी फास्ट टू अनदर लोकेशन देयर। तो दैट्स व्हाट सॉलिड बिंग वो हेल्प होता है। तो ये दैट इज व्हाट गिवन। कॉस्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सी कॉस्ट, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन स्पेंट, यूपीएससी इज नेवर गोइंग टू आस्क यू कॉस्ट, पैसे के बारे में कुछ पूछेगा ही नहीं। आपको क्या होना चाहिए, रेंज, फ्यूल, टाइप ऑफ मिसाइल, वेयर वी विल यूज, है ना, वो पता होना चाहिए। ये चीज यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो टॉप स्पीड भी यहाँ पर, जैसे यहाँ स्पीड वगैरह है, एंड सारे करंट में आया है, जितने करंट अफेयर्स है सारे इसमें कवर किया गया। द हिंदू, सी हियर अगेन, देन अगेन पेलोड, पेलोड जैसे सैटेलाइट इज अ पेलोड, पेलोड मतलब यहाँ होता है कितना हथियार, वेपन। इसमें क्या होता है, एक चीज और याद करना है, ये जितने भी पेलोड वेपन्स आर देयर, दे आर नॉट ओनली कन्वेंशनल वेपन्स लाइक एक्सप्लोजिव्स, बट दे आर ऑल्सो न्यूक्लियर टिप्ड। व्हाट इज न्यूक्लियर टिप्ड, न्यूक्लियर मिसाइल्स, दे कैन कैरी न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर है। तो प्रलय मिसाइल यहाँ पर है, ये सारा, अब ये वीडियोस है, आप पढ़ सकते हो वहां पर, ठीक है। आई विल गेट बैक टू द रिटन पार्ट ऑफ इट। क्लियर हियर, दिस पार्ट इज क्लियर, the range is higher, Pralay missile, right? This has to. So I have talked about this one, that IGMP program we started Prithvi. Prithvi is the important one. तो मैंने क्या किया, पृथ्वी बताया, पीछे से प्रेजेंट कनेक्ट कर दिया। ये अप्रोच से पढ़ना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, यू आर प्रिपेयर्ड, आइदर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर पृथ्वी मिसाइल और प्रिपेयर्ड विद द प्रहार एंड प्रलय मिसाइल। नाउ व्हाट कम्स हियर, which you all know, Agni series, we have very important missiles, Agni series, और नाम भी रखा गया अग्नि, right? तो अग्नि जो नाम है, so if you take Agni missile here, let me just go into that written part of it. So if you look at Agni series, what do you need to understand about this missile?
I'll write all the key points here. And always remember that whenever you are reading any kind of thing, even newspaper, current affair material, you must make a, something called infographics. जो बोलते हैं ना mind map, key points. If anything comes in the exam, you are able to revise. Okay, these are the key points. So if you look at Agni missile, the first thing is that it is a ballistic, same as Prithvi is a ballistic missile. What is second thing here? It's called SSM, surface to surface missile. Okay, surface to surface missile. So again, same as Prithvi, but only difference is that if you look at range here, it is basically called in medium. Medium, then comes intermediate. Intermediate, and the most important one is that long range. That is called intercontinental, right? ICBM kaha jata, long range. Agni 5 is a long range. But if you look at Agni 1, medium, Agni 2, 3, 4, intermediate, Agni 5, Agni 6, they're long range. So we have started from medium. Prithvi was short range. Now we have gone to medium range. है ना, हर तरह से हमें तैयार होना होगा कभी भी तो यहाँ पर ये चीज है. अब यहाँ जैसे अग्नि 1 A1, इट वाज हैविंग 700 किलोमीटर रेंज. अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा. कई बार ये ना कंफ्यूजन होता है व्हेन यू रीड डिफरेंट मटेरियल्स, समटाइम वेबसाइट, समटाइम बुक, देयर हैव कंफ्यूजन रिगार्डिंग रेंज. समवेयर रिटन 1000 किलोमीटर, कहीं पर 500 किलोमीटर लिखा होगा. इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? रिलाई ऑन द डीआरडीओ वेबसाइट कि व्हाट डीआरडीओ स्पेसिफाई. अब जैसे परले मिसाइल है, ठीक है, अभी परले बताया, तो आपको कहां रिलाई करना है? पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो. Because if question will be asked in the exam, you have to always go with the government source, right? What are the authentic things? Because UPSC will always rely on government fact, government data, ठीक है ना, तो वहां पर ध्यान रखना है. तो लॉन्ग रेंज लाइक हियर अग्नि 1, दैट मीडियम रेंज बोलता है. अग्नि 2, ये कई बार किताब में 2000 किलोमीटर लिखा जाएगा, कई जगह 1500 लिखा होता है. अब मैं बता क्या होता है, कई बार किताबें ना अपडेट नहीं होती, कई बार होता है ना अपडेशन जो है. तो शुरुआत में 1500 था, अब इसको 2000 तक कर दिया गया. कहने का मतलब आज अगर अग्नि 2 का यूज करें तो 2000 किलोमीटर तक कोई भी टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लैंड एंड वाटर बेस्ड. देन अग्नि 3 बहुत सिंपल है, 3000 किलोमीटर्स, यू कैन गो अप टू 3000 किलोमीटर्स. अग्नि 4 यू आर अवेयर 4000 किलोमीटर्स. तो कहने का मतलब ये है 2, 3, 4 आर इंटरमीडिएट अकॉर्डिंग टू डिफेंस टर्मिनोलॉजी, है ना, डिफेंस के भी टर्मिनोलॉजीज होते हैं, तो वहां पर आता है. और फिर आता है ये जो है, जो हमारा गेम चेंजर है, 5000 किलोमीटर्स. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर अग्नि 6. ये अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है. अग्नि 6 इज अंडर डेवलपमेंट. मैं अभी और कुछ नई चीजें बताऊंगा. अग्नि 6 इज अंडर डेवलपमेंट. अग्नि 5 तक हमने किया, लेकिन अग्नि 5 भी पूरी तरह कमीशन नहीं है. आर्मी के पास अभी अग्नि 4 तक है, लेकिन अग्नि 5 का कई बार हमने टेस्टिंग किया है. वी हैव डन सक्सेसफुल टेस्टिंग देयर. अग्नि 5 इज कॉल्ड ICBM. अग्नि 5, I'll write here, Agni 5, let me write here, Agni 5 is a intercontinental ballistic missile, right? 5000 range is made, but in a true sense, if we compare with US, Russia, China, those type of, powerful countries who are very good in military technology, 5000 is not up to them. China के पास 10,000 तक है ना. चाइना हैज डेवलप्ड 10,000 किलोमीटर्स. यूएस के पास भी है. और चाइना का जो है, तो चाइना 10,000 मतलब चाइना कैन टारगेट एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं भी कर सकता है, ठीक है. इंडिया कहाँ तक जा सकता है? 5000 किलोमीटर. हाँ, तब भी ठीक है ना, तब भी हम चाइना तो कवर कर ही लेंगे जहां तक जो है, ठीक है. लेकिन वही डिपेंड करता है कि जब दिवाली आए, रॉकेट जलाने जाए और रॉकेट चले ही नहीं, राइट, वो एक खतरा होता है, ठीक है. वो भी इंटरेस्टिंग बात है ना. कई बार देखा दिवाली टाइम में यार कोई लोग चलो आज अब रॉकेट करना है भाग गए, तो अब स्टार्ट होगा गॉन. तो कहीं वो हो गया. और पता है वॉर में टाइम नहीं रहता है, जब तक आप करोगे तब तक यू विल हैव अटैक. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. सो डीआरडीओ इज वर्किंग ऑन दैट एंड वी बिलीव, वी ट्रस्ट डीआरडीओ. डीआरडीओ पे हमारा भरोसा है, ठीक है. आत्मनिर्भर भारत, वी हैव ट्रस्ट फ्रॉम डीआरडीओ कि that DRDO, when we use that missile Agni 5, it goes to that part, we are able to hit them. So we can reach up to Africa. Red Sea we can cover, Red Sea, Horn of Africa, but we cannot cover whole Africa.
पूरा अफ्रीका कवर नहीं होगा। रेड सी तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। तो सोमालिया को कुछ बताना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो सोमालिया हमारे रेंज में है ना, वहां पर सोमालिया तक पहुंच जाएंगे। लेकिन किनिया, और उधर कौन सा है, गिनी, गिनी वगैरह जो है, गाना वगैरह, तो वहां पहुंचने में दिक्कत होगी। व्हाट अबाउट यूरोप, यूरोप वी कैन कवर, राइट। बट अगेन ग्रीनलैंड, आइसलैंड जो ऊपर पार्ट है, वहां पहुंचने में दिक्कत होगी। अमेरिका दूर है, ठीक है, लेकिन चिंता नहीं करना है। अमेरिका, कभी ऐसा तो नहीं है कि वी विल हैव वॉर, है लगता है कि यूएस विल हैव देयर, ऐसा तो नहीं लगता। जो इमीडिएट थ्रेट जो है हमें वो देखना है। ठीक है, तो ये चीज है। अग्नि 5, नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच टाइप ऑफ फ्यूल, सॉलिड, doesn't use liquid, is completely solid. And if you look at Agni 5, see Agni 5, just like a rocket are stages, है ना, स्टेज होता है ना, स्टेज 1, स्टेज 2, एक पीएसएल भी मैंने बताया था 4 स्टेज, तो यहाँ पर 3 स्टेज होता है। अग्नि 5 is 3 stage, that means 3 engines are there, just like a rocket, like ballistic is like a rocket, first stage, second stage, third stage, it is a 3 stage kind of a missile, right, that was been developed. अब मैं थोड़ा करंट की बात बताता हूँ। करंट भी ये चीज है, रिसेंटली यू हैव रिटन दिस वन, है ना, wherever you want me to slow down I'll slow down, ठीक है, are you able to follow, what's your name, huh? The Raksha, the Raksha, we are going to that Raksha is there, right? No, in this, his good name is a very different name, है ना, what's your name, you meet me, मैं वो फोन पे लगा हुआ था, हाँ हाँ, क्या नाम है, हर्ष, हर्ष इज देयर, ओके। सिमरन को तो पहचान ही जाऊंगा, इतनी तारीफ की है। वो तो नाम याद रहेगा। राइट, तो यहाँ पर ये, अच्छा करंट में ये चीज है। लेट मी गो टू द करंट एस्पेक्ट, करंट एस्पेक्ट इज दिस वन, two things have been done with Agni 5 missile. One is that we have carried out there's something called multiple re-entry kind of system, MIRV, MIRV. I'll give you the both of things which have been there. What is MIRV? I'll write the in bracket here. Multiple independent re-entry vehicle. MIRV, multiple independent re-entry vehicle. What is this vehicle? I'll tell you that. Normally, whenever we make a missile, it carry only one weapon. What is something called warhead? You'll find on the top of the missile, if I draw a diagram, if there's a missile here, so here you have a warhead, what is called tip of the missile. So worldwide, if you look at missiles, it only carries single warhead, only one weapons. That means you can destroy one target. ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, मल्टीपल टारगेट्स। तो ऐसा होता है कि द मिसाइल will go to the air and you will have up to 10 weapons, 10 तक हो सकता है, and they can go to different targets. मतलब एक से आप 10 टारगेट खत्म कर सकते हैं। तो अग्नि 5 is a long range, and imagine we have a 10 here, up to 10 weapons, or I'll use the word warhead, up to 10 warheads it can carry. It is going to be more sophisticated, कि एक बार में मिसाइल से हम कई टारगेट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अपग्रेडेशन है ना इंडिया के लिए। और दूसरा जो है सेकंड, दिस इज वन, कैनिस्टर लॉन्च्ड, कैनिस्टर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिस्टर लॉन्च्ड अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि 4 मिसाइल, सारा टेस्टिंग किया गया। नाउ व्हाट इज कैनिस्टर? Canister is a cover which enclose the missile. So here, when you say canister, ये ऐसा होता है कि there you have a vehicle. You have a vehicle here. This vehicle, and on the vehicle, this missile is kept. Mobile system which can move, and you have the kind of a cylindrical, and within that Agni 5 is there. ठीक है? Imagine that you have a system, truck like a lorry kind of thing, and you have a cover, पूरा cover है, उसके अंदर मिसाइल है। और ये क्या होता है? It can move, like it can be different angle, like trolley, you have seen that,
like a crane. It can move in an angle. It can go to vertical. It can be inclined. Now, what is very important here? इसका main reason होता है ये चीज, quick deployment. Quick deployment. जो मैंने बताया ना कि लड़ाई के समय क्या जरूरत पड़ता है कि हमें जल्दी मूव करना होता है, तो क्विक डिप्लॉयमेंट है, so we can carry anywhere. And second very important thing, which again we have to be very careful, that is it also gives this one stealth feature. See, normally today battlefield radars, there are radars which can locate weapons, WLR, weapons locating radars. तो वो जो मटेरियल से बना होता है, क्या बना होता है? मटेरियल कवरेज होता है ना, कवर करते हैं, तो उसकी जो कोटिंग होती है, मटेरियल के ऊपर कोटिंग लगा होता है, it is an anti radiation kind of thing there. That means any signal, what is radar, how radar work? Radar sends signal, right, radio wave, and that bounce back echo. तो radar knows कि यहाँ exactly यहाँ पर है. तो इसमें क्या होता है कि it has such kind of a coated material which can absorb signal. तो radar will be difficult to notice कि something is there on the battlefield, है ना, जहां पर हमें हमला करना है, अटैक करना है. तो पहला मेन मकसद क्या है? डिप्लॉयमेंट, मोबिलिटी. सेकेंड, टू कीप इट हिडन so that we are able to attack the enemy. So that is where the latest development is there. कभी भी आप सर्च करेंगे गूगल में, I'll not do that, but if you do the search, you will find that system is shown. चलो मैं दिखाई देता हूँ. सिस्टम ऐसा होता है, कभी भी होता है ना, इमेज को आप हमेशा वहां पर आप रखो, तो इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह का सिस्टम वो दिखता है. ऐसा होता है. और ये केवल अग्नि की बात नहीं है, इट इज नॉट अबाउट अग्नि, राइट. यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ मिसाइल, and it is not only India. Again, remember that it's not only India. Other countries like US, Russia, Israel, all countries, they have this canister launch. I'll just show you the images. It's like this one. Now look at it. This is the one. They're kept into this kind of a system. And you can see this is like truck or lorry. And you can see what is canister version of Agni 5 missile. When you go to the search here, it's given here. This is what you will find here. So this is where the system is kept, and it can be taken to any part, any place. That's what canister launched, and we have successfully tested it. We have already carried out the test of this, and ये सारा news में था. It was all in the news. If you go to this site also, it will give you that information. Cora. You know, sometimes you follow the Cora. It's given here. Refueled, transported, anywhere. That's what is given here. So it is the main thing is that we need to be prepared during the war time. ठीक है, तो पहला क्या है? अग्नि 5 क्या है? दूसरा क्या है? उसमें क्या अपग्रेडेशन हुआ है, right? So that what we have covered here. So you will see all these images. This all that time when it was there in the news, it was all given there, right? I'll get back to the topic here. So what we have covered? Prithvi. Second is the Agni. So now I'll get back to the third one. Is a very important missile, Nag. What is Nag for? So let me एक काम आप ऐसा करो, आप मैं लिख देता हूँ, ठीक है? So we'll get Nag. Then I don't have to go back to the page. Akash, and the last is Trishul. ठीक है? Agni, Nag. So let us go to the Nag here. Nag, Akash, Trishul. These 5 were developed, and we are discussing on that context there. So Nag, Akash, Trishul. So now when you come to, have you all written there? अच्छा, मैं एक बार वो ऊपर देख लेता हूँ, वो जो MIRV @भानु, भानु नायक. ओके, भानु, भानु कहाँ रहता है? इधर ही रहता है, हैदराबाद चला गया वो. पहले तो कोचिंग इधर ही किया वो. He was one of my student in one of the coaching institute. I'll not name the coaching institute. Right, right. उसके बाद भी दोबारा क्लास कर रहा है, बताओ. Right? No, you are always welcome. I'm not saying that you should not do it. Right? You should always, wherever you get good content, you should always do that. ठीक है? हाँ, लेकिन वही भानु, I know him. इसलिए भानु को बार बार मैं ऑनलाइन याद करता रहता हूँ. He has not changed. जैसा था वैसे ही दिखता है. मुझे लगा थोड़ा मोटा मोटा हो जाएगा खा वो के, है ना. हैदराबाद में बिरयानी अच्छा मिलता है. भानु, प्लीज डोंट टेक इन योर हार्ट. अगर वो सुन रहा होगा, right? So that's what. So you have written here Nag, Akash, and Trishul. So now let's come to this. So I don't have to always go back to the first page. So let me go back. Fifth I have covered. Now let's look at here Nag missile.
Nag. So what is first thing here? It's called anti-tank guided missile. What is called ATGM? What is the full form of this one? Anti-tank guided missile. What is very important word? Guided. It can be guided to a target. What is the target here? Battlefield tank. A tank which move in the battle area. So across the border we can use it. Now, what is here? Now, see, always there's upgradation. Now, what it comes here? It's called third generation. But अभी इसमें और भी upgradation हुआ है. I'll tell you that. Third generation, fire and forget missile. Fire and forget missile. What does that mean? 100% accuracy. It can detect moving tanks. See, Prithvi and Agni, we are looking for stationary targets. Target which are stationary. But when you talk about Nag, Nag has one feature, mobile. Tank will move on the battlefield. So it can detect the motion of the tank and hit and destroy it. दूसरा important feature क्या है? It carry a lot of explosive because tank, when you look at battlefield tank, is heavily armored. बहुत armored होता है, बहुत strong होता है. और उसको destroy करना, आपको बहुत सारा गोला बारूद चाहिए, explosives. So it can carry more explosives to destroy the tank. So here it's called fire and forget because of its 100% accuracy. It will go and hit such a battlefield tank and destroy it. That's called fire and forget. Now, what is another thing about the Nag is the range. If you look at range here, there is a very short range. इसको कहते हैं tactical. You'll always come across what tactical missile. Now, tactical missile has always very small range, not kind of less than 100 kilometers. तो यहाँ पर जो range है, initially it was developed for 4 kilometers. अभी इसको upgrade किया गया. Then came to 7 kilometers. Now it has gone to 9 kilometers. समय के साथ साथ range को बढ़ाया गया. Even I'll tell that 4 kilometers is sufficient in the border area. ठीक है? But अगर हम 10 किलोमीटर तक चले जाते हैं, तो हम दूर से ही पता कर सकते हैं कि बैटलफील्ड टैंक मूव हो रहा है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो इसको क्या है? अब यहाँ पर दो चीजें आता है. एक है नामिका. There's one word comes Namika. Let me write here Namika. What is Namika? Namika is a Nag missile carrier. Nag missile को कैरी करने के लिए, जैसे अभी आपने देखा canister launched, there is a carrier which can carry the Nag missile. कहाँ पे battlefield में? That is called Namika. And the another one is very, very important for coming exam, Helena. Right? Another thing what you will find here, there's a aerial version of Nag. Right? So there is a aerial version that is called Helena. Helena is a helicopter launched Nag. And we have a combat helicopter. Can anyone tell me which is that name of helicopter where we are using the Nag? Yes, Dhruv is there, but recently one more name has come in the news. Initially we fitted with Dhruv helicopter. Dhruv is called Advanced Light Helicopter. हल्का. अभी एक और हेलीकॉप्टर बनाया हमने. LCS बोलते हैं, Light Combat Helicopter. रुद्र. Right? This is a helicopter which are used with weapons. So यहाँ पर जो है Advanced Light Helicopter ALH. आप लिख लो ये ALH Dhruv. And which is the company which make helicopter, fighter jet? HAL, Hindustan Aeronautics Limited. HAL has built this, and recently where it has come? It has come with Rudra, light combat helicopter Rudra. LCS Rudra. तो अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है नाग का, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भी कंटिन्यू है. वी हैव नॉट रिटायर्ड नाग, अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं. हेलिना का रेंज भी बढ़ाया जा रहा है. अभी रिसेंटली उसका टेस्टिंग किया गया था हेलिना का, एंड वी हैव गॉन टू 12 किलोमीटर्स. मतलब रेंज उसको एडवांस का. तो व्हाट विल बी देयर? हेलीकॉप्टर विल बी इन द एयर, एंड यू नो हेलीकॉप्टर कैन स्टैंड स्टिल इन द एयर. यू नो हेलीकॉप्टर रुक जाता है ना, हवा में रुक जाता है, वो घूम वहीं रुका रहेगा. इन हावर वर्ड हावरिंग. इमेजिन दैट इन आवर border side, LAC or LOC, the helicopter is in our side, and this helicopter with the radar system sees the battlefield tank and fire Helena. Helena goes there.
ठीक है, तो एक बार आपने टारगेट को लॉक कर दिया, व्हाट इज कॉल्ड लॉक, यू हैव टेकन दैट कोऑर्डिनेट, so wherever that tank will move, Helena will go and hit the tank. That's what the technology has been advanced. So Helena is a very, very important one. Let me just again show you this one. When you go back to here, Google search, you'll find here, you'll get this name here. This what you'll come across. ये अभी recently भी न्यूज में था, Helena missile testing there. The Hindu. ये काम करना है May onward, like May is the exam. April and May, you should be whatever you have read from your general studies, you should explore out there. See, 2023, helicopter launched Nag, Helena, anti-tank guided missile. That was in the news there. Now you see here, Dhruvastra, right? A variant of Helena. That was in the news. It is one of the most advanced anti-tank weapons in the world, a variant of Helena weapon system called Dhruvastra. और इसका नाम बहुत सिंपल है, करंट ध्रुव, ध्रुव क्या है, हेलीकॉप्टर, अस्त्र मतलब क्या है, वेपन्स, द वेपन विच इज यूज्ड बाय ध्रुव हेलीकॉप्टर, ध्रुवास्त्र, सिंपल है याद रखना। क्या याद रखना, हेलिना कहाँ यूज करते हैं, ध्रुव हेलीकॉप्टर, तो उसका दूसरा नाम क्या है, ध्रुवास्त्र, दैट वे यू कैन रिमेंबर, है ना, ये चीज यहाँ पर है। दिस वाज ऑल इन द न्यूज, सी हियर, दिस वाज इन जस्ट इन न्यूज, आई थिंक जुलाई मंथ द न्यूज इज गिवन देयर, ये पार्ट यहाँ पर है, एंटी टैंक मिसाइल कंप्लीट ट्रायल, all these have been done, and now you can see a photograph given there where the missile has been successfully test fired. जो भी ऐसे न्यूज में कुछ भी आता है, कोई भी हेडलाइन आता है, और डिफेंस का न्यूज़पेपर रहता ही रहता है, तो आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। तो दैट इज वेयर आई हैव मेंशन कि वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम, दैट इज नाग। नाउ कमिंग टू दिस वन, which I would like to add here, surface to air missile, SAM. Surface to air missile, if you look at surface to air missile, so initially we built, let me add here with the latest one also there. When you look at surface to air missile, what is surface to air missile? We fire from land surface or water surface, it goes there, aerial there. अब मैं इसको दो पार्ट में बताता हूँ। पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो आईजीएमपी का था, आईजीएमपी में हमने दो डेवलप किया, एक है आकाश, इसका जो रेंज है, रेंज फॉर 30 किलोमीटर्स, 30 kilometer horizontal range, Akash can be used. Now Akash is not ballistic missile, remember that. Akash is, it is surface to air, it just straight goes to the air. तो क्या क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, है ना, अभी आजकल ड्रोन की बात हो रहा है, एरियल टारगेट वी कैन डू दैट। नाउ दिस इज बाय being used by army, army can use it. Now we have another army, and we can also use by navy, army के लिए, but for navy that time we developed Trishul. Trishul missile was again surface to air missile, but range was only 11 kilometers. Now this is for navy, for Indian navy we have developed, छोटा रेंज था, 11 किलोमीटर, कुछ ज्यादा रेंज नहीं है, सी सरफेस की मुझे बात करें तो 11 किलोमीटर 13 किलोमीटर वो रेंज था त्रिशूल का, कहां पर, नेवी के लिए किया गया था। अब क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड नाउ, आकाश कंटिन्यूज, वी कंटिन्यू विद दिस आकाश, बट दिस वन decommissioned, Trishul has been now decommissioned, we have not continued with it, and what we have developed, which is important for the exam from the prelims point of view, we have developed another missile which is more advanced than Trishul, what we developed, that is called as a Barak. Barak missile. Now this is being used by Navy, not by Army, but only by Navy. Barak. Now you have read Barak there. Barak is the name of river. कहाँ है, नदी है, किस जगह पे ये नदी है बराक, किस जगह इंडिया में बराक रिवर है, नॉर्थ ईस्ट में है, असम, अंदर बराक रिवर है, ठीक है। अब बराक जो है इंडो इजराइल कोलैबोरेशन है, इंडिया एंड इजराइल, दिस अ इंडो इजराइल
joint venture. That means India and Israel company together develop that. इसराइल में एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, IAI बोलते हैं. अब देख रहे हो, उसमें कंफ्यूजन नहीं हो ना, कीवर्ड है. एक आप पढ़ते हो रफेले, रफेल, रफेल इज द फाइटर जेट फ्रांस. अनदर रफाले, RAFALE, that's a Israeli company. So that along with India, we developed this Barak 1 and now Barak 8. Barak 8 जो है, which is इसका मैं रेंज बताता हूँ. The range of Barak missile, that is 80 kilometers. Navy can go any 80-kilometer range in the water, sea water, and can hit 10 to 12 kilometers in the air. And अगर multiple aerial targets, कोई भी multiple target जो है, चाहे वो ड्रोन हो, फाइटर जेट हो, हेलीकॉप्टर हो, उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अब त्रिशूल यूज नहीं हो रहा, त्रिशूल इज रिप्लेस्ड. वी आर यूजिंग बराक, राइट, वी आर यूजिंग बराक. अब इसमें दो नाम और आता है, QR SAM and MR SAM. MR is a medium range surface to air missile, and second is quick reaction, QR, quick reaction. One or another comes into that. So that MR SAM, right, MR SAM is for Navy, medium range. ठीक है. QR SAM we are using for the army part, quick reaction जो है. तो ये सब जो अभी नाम जो दिया जा रहा है, और ये सब PIB में भी आता है. When you read PIB में ये बराक मिसाइल के बारे में काफी कवरेज हुआ है. तो अगर आप यूपीएससी को क्वेश्चन पूछना होगा तो विल आस्क यू अबाउट बराक मिसाइल. ठीक है. इट इज नॉट अ बैलिस्टिक, रिमेंबर दैट. व्हाट इज बैलिस्टिक? दिस इज नॉट क्रूज मिसाइल, क्रूज सेल देयर. इट सिंपली goes straight, right? It's called surface to air missile. It has a different path. ठीक है. So that we have developed there. And now if you see here what I mentioned, this surface to air missile, Israel has become our strategic partner, है ना, फ्रांस के बाद. और यूएस, अभी यूएस के साथ भी हमारा बहुत सारा डील हो रहा है, तो इजराइल के साथ भी हमारा हो रहा है. ऑल्दो यू नो हमास का जो भी चल रहा है, राइट, हमास अटैक जो था उसमें अब आपने देखा होगा, इंडिया बीइंग अ सॉफ्ट पावर, इसमें ना डिफेंस में IR भी आता है. इंडिया बीइंग अ सॉफ्ट पावर ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस. अभी रिसेंटली यू नो एस जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, ईरान है ना, ईरान के साथ है. जबकि पता है ईरान के साथ भी कितना वर्ल्ड वाइड वहां पर हो रहा है. ईरान क्यों जरूरी है? हमें इकोनॉमिक में चाहिए ऑयल गैस, we get from Iran, no? That Iran becomes a very important country in that context. Same way, India also maintain relationship with Palestine also. अब देखो, जब हमास अटैक हुआ, then when Israel counter fired, तो हमारा इजराइल के साथ भी दोस्ती है, all defense and everything, but we were also in side of Palestine also, है ना. उस समय गवर्नमेंट ने पूरा 100% इजराइल सपोर्ट नहीं किया. It also supported Palestine also. So that's what is the balance of power there. But what is very important, we have a very good relation with Israel, and particularly for defense. And Israel is very advanced in R&D, research and development. अब वो इसका रीजन है क्यों पता है? अब देखो क्या है, इंडिया जब आजाद हुआ तो हमारे लिए क्या था? रोटी कपड़ा मकान. आजादी के बाद यही था, कैसे रोटी मिले, कैसे कपड़ा मिले, कैसे मकान मिले, वो प्रायोरिटी होता है ना. अब इजराइल जब बना तो आपको पता है इजराइल किस कॉन्टेक्स्ट में बना, यू नो, द जूइश नेशन. The country priority defined by the context. So Israel, after becoming a Israel, right, Israel spent huge amount of money into defense R&D. और हमने पैसा कहाँ लगाया आजाद होने के बाद? रोटी कपड़ा मकान, social aspect. So we went for, see, we also went for DRDO, no, but our priority was first in terms of food grain production, right, industrial development, satellite. Why we went for satellite? Communication, radio, all those kind of information. That was the focus. But if you look at a country like Israel, which was born because they were settled there, so they had to fight, and they spent huge amount of money. That's why their scientists, their engineers, they've been trained to develop cutting edge weapons. हमारे केस में भी है ना, हमारे केस में भी है, लेकिन वो उतना फास्ट नहीं होता जितना इजराइल का हुआ है. तो हमेशा याद रखना, डिफेंस technology upgradation is again shaped by the country's geography, its geopolitical situation, and then government policies and program, right? अब हमारा प्रायोरिटी बदल रहा है, यू नो. अब जो डिफेंस का जो प्रायोरिटी है,
इंडिया का चेंज हो रहा है. Particularly now we want to go into more advanced technology like drone, and we are also going for anti drone. That's what we are coming to. क्यों? वो अगर हमारे में ड्रोन अटैक नहीं होता तो इंडिया वुड हैव बीन स्लो, बट सिंस इन द पास्ट वी फेस द प्रॉब्लम ड्रोन्स, तो वी आर नाउ गोइंग फॉर एंटी ड्रोन. डीआरडीओ इज डेवलपिंग दैट, वो डेवलप कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये चीज है कि इवन इट कैन डिस्ट्रॉय ड्रोन ऑल्सो. देयर बराक मिसाइल इज अ वेरी एडवांस मिसाइल. ठीक है, कहाँ यूज कर रहे हैं? नेवी, इंडियन नेवी. त्रिशूल हैज बीन नाउ रिटायर्ड. Correct. So these were 5 development when IGMP program. 2009 that program was over. Now what will come here? Apart from this, let us understand another thing, that is a cruise missile there. See, when you talk about cruise missiles, right? Cruise missile system. So what is first thing here? They sell, right? Sell in air, maintaining here. They maintaining a height from surface, and normally they are very close to surface. They don't go very high. They maintain very close to surface. They move that. That means once you fire a cruise missile, right, it will not go like this. Follow like this. It will go like this. And just like, fighter jet. Fighter jet, move up in the air. It goes into that. So now let's say, suppose the target is here. This is the target. So what will happen here? It will just chase, go in the air, and then drop. Go and hit the. So that means it has a very important thing, maneuver. It's easy to maneuver. Here, what is very important thing here? One is this flexibility. Flexibility to maneuver. See, ballistic missile is not very easy to maneuver. Ballistic missile का generally fixed path होता है. It has a fixed path. But if you have target which are not fixed, they can move. Suppose this target here, even this target moves here. Suppose this target comes here. So what will happen? This will again move here, chase the target, and again hit the target. So that's where the cruise missile has the advantage. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है? क्रूज मिसाइल को प्रोपल्सन के लिए फ्यूल चाहिए. तो अगर आपको ज्यादा दूर तक प्रोपेल करना है तो ज्यादा फ्यूल चाहिए, और ज्यादा फ्यूल करने पे क्या होगा? बिकम हेवियर. इफ द सिस्टम बिकम हेवियर तो वेपन विल बी लेस. व्हाट इज द वेरी की थिंग? वेपन. मिसाइल इज व्हाट? मिसाइल इज जस्ट अ डिलीवरी. ये डिलीवर करता है. अगर ये डिलीवरी सिस्टम बिकम हेवी, द वेपन विच यू कैरी दैट विल बी स्मॉलर. तो इट विल नॉट हेल्प, राइट? अच्छा, कुछ हो गया? नहीं, दैट विल नॉट हेल्प हियर. So that's what the biggest problem with such missile is, that range. They don't have long range. They are short to medium range. You'll find up to medium range. That means such missiles are more effective up to 2000 kilometers. Mostly they are less than 500 kilometers. Less than. Right? Maximum I'm saying this kind of range could be there. And we have such system there. We have got a such system there. यहाँ पर दो नाम आता है. One is the BrahMos and second Nirbhay. Now what is another thing here? Speed. Now speed, there's 3 terms: subsonic, supersonic, and hypersonic. So this type of missile, I'll write here. This type of missile could be all 3 type of subsonic. What is subsonic? Less than 1 Mach. What is 1 Mach? Speed of sound in air. कितना होता है? Speed of sound in, what is the average value of speed of sound in air? Or average value? 320 meter per second. 320 meter per second. Average I'm saying. Accurate is 332 meter per second. But air has moisture, temperature, तो वहाँ vary करता है speed. So 1 Mach, 320 meter per second. Less than that. Then you find here supersonic. Like BrahMos is supersonic. Supersonic जो है, that goes from 1 Mach up to
5 Mach. And anything above 5 Mach, that is hypersonic. If the speed is 5 Mach and above, that is a hypersonic. Now BrahMos is now being prepared for hypersonic. हमने शुरुआत में सुपरसोनिक बनाया 2.8 मैक, ब्रह्मोस का 2.8 मैक था, अब वो हाइपरसोनिक बन रहा है 7 to 8 मैक. अब सोचो, कल्पना करो, इमेजिन करो, एक मैक कितना है? 320 मीटर पर सेकेंड. सपोज 5 मैक भी ले ले, तो 5 into 320 कितना होगा? 1600 मीटर पर सेकेंड और 1.6 किलोमीटर in 1 second. 1 second, you imagine the पलक झपकते 1 second तो पार हो गया ना. When you're talking 1 second, आपको दिखाई भी नहीं देगा, क्रॉस हो चुका है, निकल चुका है वो. And 1.6 किलोमीटर का मतलब, imagine that from here, this classroom, right? We can go up to this metro stations and above that. गफार मार्केट गया. एक सेकंड कैसे पास होता है पता नहीं है. एक सेकंड में मिसाइल गफार मार्केट पहुंच गया. ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा मिसाइल क्रॉस कर गया, इतने स्पीड होता है. They move such fast speed, right? So it is very, we are developing that in a powerful way, that we are developing that. So that's what a cruise missile. Now another thing, it can be used by army, it can be used by air force, it can be used by navy also. All three services can be used. So here you can write, can be used by all military forces. All military forces can use cruise missile. And BrahMos has 3 versions: army, navy, air force, and we are using in all 3. And it is the first of its kind missile in the world, where the technology which we got from Russia to build that missile, now we are going to encash. जो हमने बनाया, अब हम पैसे कमाने चाह रहे हैं. Vietnam is one country. At least many countries have come forward to buy BrahMos from India Russia joint venture called BrahMos Corporation. We have a company. उसमें partnership में 51% India stake and 49% is Russia stake. So we are now going to earn money by selling the missile. तो अब इसमें यहाँ पर ही है, जब initially BrahMos बनाया गया, all have copied this one. हर्ष, right? आपका नाम हर्ष किसने रखा? पापा ने, मम्मी ने? नहीं, अब हर्षित हो रहे हो. Now you are smiling there. नहीं, he was very serious. He was having very serious kind of thing. That's what I've asked. ठीक है, now look at here, BrahMos. So BrahMos initial development here, which are 2 rivers where it is named Brahmaputra and Moskova, Indian River and Russia River, right? That is not very important, but the name BrahMos you have to remember. So it was 290 kilometer range, and the speed was this one, 2.8 Mach. Okay, that is initially we developed. Anybody in the classroom, why such a small range, 290 kilometers, and the speed was supersonic? They're supersonic now. Now the present is this one, 400 plus kilometers, and now we are developing what type of missile? We're developing for this one, 7 Mach hypersonic. We are going for 7 Mach. अब मुझे बताओ, इनिशियली क्यों इतना कम रखा गया रेंज? Yes, very good, very good. This was because there's a block of countries, group of country called MTCR, Missile Technology Control Regime. In 2016, India became a member. Before 2016, India was not a member. So missile technology is a formal group control regime. So before 2016, Russia and all those countries were the member country, right? But 2016, India became a member country, and then we decided to enhance the range and the speed. What happened with this kind of group of countries? They control such a transfer of technology from member state to non-member state.
That means they allow in some case transfer, but with restriction. Now India is a member, we don't have any restriction. We are free to use it, right? Or India क्यों member बना? Why India became member? Because China is not a party, right? China is not the part of this. Had it China been part of the MTCR, China would have always opposed India's entry. So we have become a member of something called MTCR. Second is called Australia Group, AG. And third is Wassenaar Arrangement, WA. But we have not become member country of NSG, Nuclear Suppliers Group. And why China factor? राइट, हाँ, अब उसमें चल रहा है, अभी डिस्कशन चल रहा है, बट बाकी तीन में हम लोग घुस गए, इसमें आराम से घुस गए. चाइना वाज नॉट देयर टू अपोज इंडिया. तो नाउ वी हैव इनहेंस द रेंज. और एक और एडवांटेज क्या है, बाय बीइंग अ मेंबर कंट्री ऑफ दिस ग्रुप वी कैन गो फॉर कॉमर्स, वी कैन आल्सो ट्रांसफर अदर, एंड वी कैन सेल आवर वेपन्स टू अदर्स. बिजनेस ना, हमें भी इकोनॉमी करना है ना, करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, हमें भी तो कमाना है. तो इन दैट वे वी कैन डू. And Vietnam being one country which wanted to get the BrahMos missile, right? Why Vietnam is so much interested? South China Sea, right? China's presence in South China Sea, and one of the problem which China has got with Vietnam, and you know why India is interested in Vietnam? Because Vietnam, South China Sea is rich in fossil fuel, hydrocarbon, and we have a venture called OVL, ONGC Videsh Limited, right? And we are doing that one. So we want that presence of that resource, and in that case we want to support Vietnam in that way there. तो वहां पर वो एंगल आता है. डिफेंस टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कनेक्ट विद द जियोपॉलिटिक्स, वो पार्ट में कनेक्ट करना. ठीक है. नाउ आई विल बी कमिंग टू अनदर नेम, निर्भय. निर्भय इज अनदर वन. दिस इज अ, आई हैव जस्ट मेंशन देयर, निर्भय मिसाइल. नाउ निर्भय is also a cruise missile, but it is a, I'll write 2 points here. First is subsonic, less than 1 Mach. इसका स्पीड जो है 0.7 मैक है. बट इसकी एडवांटेज क्या है? व्हाट इज एडवांटेज हियर? स्टेल्थ, stealth feature, not easily identified by radar. Although, you know, speed is less. BrahMos is fast. BrahMos is very fast, right? This is small in speed, but it has the capability of giving, you know, fooling the radar. Radar को चकमा देना. Stealth feature है वहाँ पर. Again, coating and everything. And another very important thing, range. If you look at the range here, it has a longer range than BrahMos. Its range is here 1,000 kilometers. 1,000 kilometers. Right? This is what Nirbhay missile has been developed by DRDO. Now, अब देखो इसमें एक चीज और समझना है. BrahMos is the joint venture, but Nirbhay is completely 100% India's. ये जो है पूरा का पूरा इंडिया का है निर्भय. जो ब्रह्मोस में दो कंट्री का पार्टनरशिप है, इंडिया रशिया बोथ आर पार्टनर्स in that case, right? But Nirbhay we developed. So what generally India does, what is policy of India's? We have a Defense Acquisition Council, DAC. So what we do, we first buy the system, we pay for it, and when we do the buying part, when we have a deal, defense deal, we also ask for technology transfer, so that the technology come to India, and then we modify, indigenize it. So nowadays, whatever we are having deals with the country, we are trying to take the technology and modify. Like same we are doing for now, Rafale. We have 36 Rafale from France. So we are trying to indigenize it, make our own kind of Rafale. जैसे हमने तेजस बनाया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं. तो हाँ, तो वही चीज. तो दिस, तो हमने क्या किया, पहले पहले रशिया से लिया टेक्नोलॉजी. वी टुक द टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया, had a joint venture, and now same technology we work to develop Nirbhay. Nirbhay missile has been. ठीक है. Again, this comes in newspaper. You'll find in the newspaper. This will be all in the newspaper there, right? और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसमें ये बात था. तो लेट मी सी हियर, और लेट मी डू वन थिंग हियर. I'll do one thing here. Ballistic
right? And prelims, we'll get the question here. I just want to show you the language of the question. So what exactly the language used in the question paper. This one. This is the question was there. Ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds throughout their path, throughout their flight, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight. Number two, Agni 5 is a medium range supersonic cruise missile, while BrahMos is a solid fueled intercontinental ballistic missile. A very simple question. Anybody can solve this question. Right? What should be the answer? None. Very good. None. A very simple question was asked. Keyword is a very catchy word is there. Simple thing is that jet propelled or cruise missile, like a fighter jet. Right? If anybody knows that ballistic missiles are like rocket, I've told you, they go like a rocket and come back to the earth under the influence of gravity. But the cruise will sail in the air, sailing through, cruise through the air. So the person will be able to know that they're wrong because it has to be interchangeable. They're interchangeable. Many times you'll find in the exam, such kind of statement questions are there, and where they interchange the things there. So correct would have been like this one. Cruise missiles are jet propelled, right? While ballistic missiles are rocket powered. Right? Another one more mistake is this subsonic. 99% of those missiles, cruise missiles, are supersonic or hypersonic. Subsonic you'll find very rare. Another problem, see, another this one, medium range, right? And you all know, and every student knows, because Agni missile is always in the news, and Agni is a surface ballistic missile, and also Agni 5 is ICBM, intercontinental ballistic missile. So second is definitely wrong. So here answer is none. That was said this question was asked. You have to read about the missiles. But again, what I said in the initial part of the class, कि whatever has been asked, now they will not repeat it. They'll go something else. But for your preparation, you should have the background. You should have the knowledge. Right? उसको पता होना चाहिए. अब वो कहाँ help करता है? Where does it help? Let's say when you appear in group exams, you know, Telangana, Andhra Pradesh, you have group 1, group 2 exams. Or when you appear BPSC, JPSC, RAS, MPSC, state PCS, तो they can ask about missile. है ना, मिसाइल में आ सकता है क्वेश्चन. तो आपको ये भी ध्यान रखना है. ठीक है. अभी कौन सा होने वाला है? यूपी पीसीएस होने वाला है. नेक्स्ट मंथ देयर इज यूपी पीसीएस एग्जाम, है ना. कब डेट है? 17 मार्च. जेपीएससी भी हो रहा है, सेम डे हो रहा है. तो कैसे होगा? हाउ वुड यू मैनेज दैट? हाउ मेनी पीपल अपियरिंग स्टेट पीसीएस? एनीबडी फ्रॉम आंध्रा तेलंगाना? वेयर इज द ग्रुप एग्जाम्स? Not announced there, Telangana. Andhra also has not announced. Next one, because I got that input that very soon, because now the change of government is there, no? Telangana government has changed there. So for a long time, this group exams, and maybe this time vacancy would also be higher. These vacancies are going to be there. So I was getting input from Hyderabad, that part. But at the same time, आजकल क्या हो रहा है? Paper leak. All paper leaks are there, right? So recently, RO exam, AO exam, RO exam there, UPP is there. Paper was leaked there. Before that, JSSC paper leak was there. Then again, CSIR, that paper was leaked, right? Now, big scandals are coming out. What about group ones? No paper leak. Pakka? Dates are around there. No, that but sometimes there are rackets. There are certain rackets which work in that kind of area there, and that is really dent on the preparation of students. Those are working very, very hard. Imagine you are going on the day of the exam, and after come out of the exam hall, that exam is cancelled, right? And sometimes what happens, the many students would have qualified that paper, but then again exam is cancelled because of right. That's what happens here. Don't worry, you have to 2 times happened there, right? So you have to always keep on working hard, right? And again, your target is UPSC. Focus on UPSC. Don't look back there. Okay? But keep some backup. Plan B should be ready. Plan A and Plan B. If Plan A doesn't work, just like rocket, one rocket doesn't work, another rocket is ready.
right, to fly in the air. So that you have to be always be looking into that. ठीक है यहाँ तक? Is this clear here? All right. So this question which I mentioned, you should always look back to the question paper. Now I'll cover one more thing here. Then let me see where that वो जो था ना पीपीटी कहाँ गया? ये तो हाँ फाइल में अच्छा this was in the news. Iron Dome. Now this is from Israel. But again, remember that if you look at Israeli system, they're not for long range. 30 kilometers, 30, 40 kilometers, rockets and small missiles. That Iron Dome can intercept. But why it was in the news? Because its accuracy is not very high. It just fell on the same territory. Sometimes it has to intercept and hit the uh, enemy missile. But again, it was not working properly. So you can say there was some kind of a technical problem with the Iron Dome this time. तो हमास की तैयारी बहुत मजबूत थी, right? पूरे तैयार थे वो लोग. They were all prepared, and that was the Iron Dome you'll come across. Initially, India was trying to buy Iron Dome, but then we decided to go for more advanced. Now there's another one where UPSC again has asked the question. You are aware American system is THAAD. It's called Terminal High Altitude and Area Defense System. THAAD missile. And what was the question? Not from science and technology. UPSC didn't ask science and technology. UPSC asked the question that was in current news: South Korea and North Korea. Kim Jong-un, right? Rocket man, right? You know Rocket man? Sometimes he come and then start firing missiles and everything, right? Then he disappears, right? That North Korea, Kim Jong Un, he's a very celebrity. He's a very celebrity person. And Donald Trump, Donald Trump, another celebrity, right? American ex-president. So that time, Donald Trump and this Kim Jong Un both were tussle, right? And Donald Trump used to say, "Rocket man." That rocket man was good. He used to fire rocket one by one, right? So this third was there because South Korea is supported by US, and there was imminent threat that North Korea could attack South Korea. To protect South Korea, air defense. America was going to deploy what missile? THAAD missile. Is an anti-missile, right? And which is the Russia's one? If you look at Russia, so you have three names: S-200, S-300, then S-400, and the latest is S-500. It has gone from 500. The most advanced now is 500. 500 means 500 kilometer range. 500 किलोमीटर का रेंज में कोई भी दुश्मन का कोई भी मिसाइल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है. That's what the Russian system comes, right? So Russia has now upgraded the S-400. Now China and India both are using Russian system. Even China doesn't have indigenous system, right? Just like India, but again remember that India is working to develop indigenous. China is also working, but both are using Russian technology, right?
Now I'll come to India's DRDO development. We have built two types of missile, right, which we call as a Pradyuman and Ashwin. Ashwin, what you see here, this is a advanced air defense. This can up to 15 kilometer. I'm talking height, 15 kilometer in the atmosphere. Any enemy missile can be intercepted and destroyed. And we have done successful testing, right? Another one is Pradyuman. Pradyuman is long height. Pradyuman is almost like ASAT, ASAT, anti-satellite. Pradyuman can go up to 100 kilometers. That height we have. So what you see right now, this is what I have given the examples worldwide. So India's, you can write here, DRDO has developed these two names. Then I'll come to one is the Ashwin. This is called as a AAD, Advanced Air Defense. And second, we have developed Pradyuman. Now, Pradyuman missile, that is a longer altitude, that is called PAD, Prithvi Air Defense. What is called PAD? Prithvi Air Defense. It has been given the name Prithvi, right? Not the Prithvi missile. Don't mix with Prithvi missile. The name has been given Prithvi Air Defense, PAD. That is we can go to how much? 100 kilometers in the atmosphere. Imagine 100 kilometers, almost like we are going to exo-atmosphere. There we can detect. So, अगर ऊपर मिस हो गया तो नीचे किसको हम यूज करेंगे? Ashwin. If you miss the high altitude, the low altitude we are going to use what is something called exo-atmosphere, endo-atmosphere. For endo-atmosphere we have Ashwin. For exo-atmosphere we have Pradyuman. इसमें क्या होता है? What you have to understand. There is not a simple missile. Remember that I'm writing the name missile. It's not a missile. It has a system. First, you have a unit. There's one unit which is made of radar. Right? What is there? There's a first. It has 3 units. I'll tell you what is 3 units. First unit will be radars, which survey. And radar not only survey, radar also determine the speed and angle and direction. Now that information radar system, that battery means the unit, transmits the information to control and command unit. There's another unit called control command unit, which receives the data from the radar. And then control command unit will see the location and fire the missiles. And the third unit will be missiles, which will go to the air. 3 unit होते हैं. One is radar system, second control command system, and third is the missiles, anti-missiles. All 3 work together. तो अभी हमारे पास नहीं है. हमने क्या डेवलप किया है? मिसाइल डेवलप किया है. We are working to develop more out of it. ठीक है? We are working on that. All right, those people who are from Hyderabad, are you able to understand Hindi? थोड़ा तो पता है. हैदराबाद में मालूम होता है. उधर तो बोलते भी है कुछ लोग. मैं गया हूँ अभी, चार मीनार वगैरह. अभी वो पैराडाइज बिरयानी इज नाउ नॉट. बावर्ची वो आरडीसी वाला बहुत मजेदार है. जगह नहीं मिलता है उधर. वंस यू गो देयर ना, इज ऑल फुल पैक्ड. दोपहर के टाइम, लंच टाइम. वो सिनेमा हॉल है, बगल में एक थिएटर भी है. दैट थिएटर इज स्टिल देयर, ओल्ड थिएटर. दैट व्हाट इज द नेम ऑफ थिएटर? हाँ, संध्या theater is there. Now you'll find metro and all things have come up, right? All things are going now. Hyderabad is also developing very, very fast, right? And during the time of Eid, Eid and all, हैदराबाद का अलग ही लुक होता है. हाँ, कुछ बचता ही नहीं. हलीम तो बचता ही नहीं वहां पर. हलीम इज दैट ऑल फ्रेश. लोग लाइन लगा लगा खत्म. We don't have the halim and all this. That time there, Charminar and all this. Charminar is known for pearl, right? Pearl there, right? Pearl, that moti. And pearl again, one has to be careful about buying the pearls from there, right? So Hyderabad has, and which one? Bangle also there. Chudi jo Bengal वगैरह जो है, right? So I miss Hyderabad. That's what Ashok Nagar is another Rajendra Nagar there, right? All coaching institutes are there. But अभी क्या होता है कि ज़्यादातर लोग लोकल फैकल्टी यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द वहाँ पर है, तो वहाँ पर पढ़ाते हैं. ग्रुप के लिए बहुत अच्छा है. बट देयर आर बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट आल्सो व्हिच आर देयर, राइट? तो यहाँ तक क्लियर है? एवरीबॉडी इज क्लियर, कंफर्टेबल? सो आई हैड टाइम. मेरा मेन पर्पस था आप लोगों से इंटरेक्ट करना. तो यू विल गेट द स्लाइड. इसमें और भी बहुत सारा है. सबमरीन्स, रडार सिस्टम्स, दैट आई विल कवर इन माय लेटर क्लासेस. द फ्यूचर क्लासेस आई विल कवर.
I will be going through this slide, but I'm giving right now so that you see the slide there. See, normally when I'm using slide will not have information much. Slides are always pictorial. I don't use many things. I believe in writing on the board and teaching there, but you'll have all the photographs here. But somewhere you'll have a content also there, which you can follow there. Okay. Okay. Doubts, interaction, because then I have a meeting here. Another meeting I have to go there 4 o'clock. Yes. Any doubt you have? Your name is Dakshika. Huh? The THA DRA DRA the Raksha. Good name. I'll remember that. The security. The security. The Raksha. Right. The security. That is the name. I remember it. Yes. What is your background? Your educational background? Oh, so then this missile and all science and technology. You're able to manage it? समझ में आ जा रहा है? पक्का? आ जा रही गुड. कहाँ से हो आप? इंदौर. इंदौर अनदर हब. अब यहाँ से दिल्ली वाले लोग भी भाग भाग के इंदौर में कोचिंग खोल रहे हैं. राइट. पार्ट ऑफ दिस. अब मुझे नहीं पता वहाँ कौन किसको पढ़ा रहा हो, कैसे पढ़ाते हैं वहाँ पर, वो अलग बात है वहाँ पर. तो इंदौर के जो लोकल लोकल बच्चे होते हैं वो क्या ब्रांड नेम देख के एडमिशन लेते हैं क्या? जो ठीक है दिल्ली बेस्ड है तो एडमिशन ले लो. ऐसा ही होता है वहाँ पर. बिल्कुल. हाँ. गुड न्यूज देयर. तो हाउ यू गॉट टू नो संभवम? थ्रू ऑनलाइन देयर. तो दे हैड अ टेस्ट. हाँ, they merit test and then they got it. Okay, that's good there. See, no institute is perfect. I'll tell you. Everything has a good thing and bad thing, right? This is just to take you to that direction. Ultimately, your hard work, right? You are going to become an IS officer because of your hard work, right? Institute is just like this. You study from here, you study from anywhere. It's just a platform there. हाँ, बस यही है. कहाँ पैसा बचाना है. यहाँ पैसा बच गया, वहां लाखों रुपए लग जाएगा. बस अंतर वही है. ठीक है. यस. व्हाट अबाउट यू? व्हाट्स योर नेम? हाँ. AR Arship. You are from which place? Which place? Native place? What is your native place? कहाँ से रहने वाली हो? बिजनौर से है. वो थी ना टॉपर, कहाँ की थी? ऑल इंडिया रैंक 1 हिस्ट्री दिस. श्रुति. श्रुति. हाँ, वो शर्मा, वो वही से है ना, बिजनौर से ही है ना. हाँ. जो है ना, और भी है. जुनेद अहमद इज ऑल्सो फ्रॉम देयर. व्हाट अबाउट यू? व्हाट्स योर नेम? अर्पिता. यू आर फ्रॉम सेम प्लेस? नो. देन फ्रॉम वेयर? Ajad. Another from MP. You interacted with each other, all MP people. What about you? हाँ. Oh, दूसरा सिमरन. सिमरन 1, सिमरन 2. यस. हाँ, आप कहाँ से हैं? नागपुर. कसा है मजेद? हाँ. तो वहाँ पर नागपुर इज नोन फॉर संतरा, ऑरेंजेस, राइट? नागपुर. अच्छा, ठीक है, अच्छा है. तो नागपुर से सिमरन 2 इज देयर. सिमरन 1 फ्रॉम विच प्लेस? Oh my God. Some Odisha. Which place from Odisha you are? Barampur. But you don't look like Odia. And that's another thing there. No, I thought she's from UP and Bihar. But I found that. Okay, Barampur. Barampur is known for turtles. I've been once there, Chilika and all this. And I go to this Bhubaneswar for classes. 3rd March, I'll be there in Bhubaneswar. And